is the third workshop. So like what I want all of you to guys do is when you attend this workshop, be attentive and stuff, because deep learning is a very important topic, and especially neural networks, which you will be using throughout the course of the event for building models and stuff. Right. So we'll continue from where we left the last workshop. So in last workshop, we discussed linear regression, which was basically predicting real values using a linear hypothesis, meaning anything like from a house price, or maybe some kind of content, protein content, vitamin content in any sort of fruit or vegetable. So that kind of thing is linear regression, where you predict linear real values. Then logistic regression is basically predicting classes using that linear hypothesis. So now instead of uh, predicting real values or real values, you predict classes basically, where you can have basically a class as an image. So image classification, dog, cat, etc., etc. So there are different types of classes that you can predict into. So that was logistic regression, and then we worked also on overfitting, underfitting, right? So all those regularization stuff we touched upon. So now, what exactly and why do we shift to this problem? Like, why do we shift to neural networks? What was the problem with using linear regression and linear hypothesis? So that is what I'm going to discuss right now. So you see, like whenever you work with data, for example, so that data isn't always linear. By linear, what I mean is there isn't any linear relationship. You can't say, okay, you have some feature variables x1, x2, x3, and you basically use a linear combination of that. You have a sort of linear function and you map it to the target variable. So that can't be done like in most of the situations. Real world data isn't like that. There are multiple functions. You can have some non-linear function or stuff. So as you can see here, the target variable, which is y, so it can be a function of x, where x are the features, and that can be any function. It might not be linear, it can be non-linear as well. So for example, here you can see theta naught plus theta 1 x1 x2 plus theta 2 x1 square x2 cube. So you can see here that this is basically a non-linear function because of this x1 and x2 whole cube and this x1 x2 term. So you can see here that this is not a linear function, this is a non-linear function, and this can occur in real world data. That is why linear hypothesis can't be used always. And if we assume that, okay, this is a linear hypothesis, then it might not give very good results. Okay, so that is why linear regression or logistic regression don't work very well in complex situations. Okay, so this is basically the problem with that, what we studied before. So one of the solution can be, like you would have studied in the previous previous workshop, that we have theta naught plus theta 1 x1 plus theta 2 x2, and you can basically have a linear combination of features. But now what we can assume is that our hypothesis or function is some sort of polynomial. कि भाई यहाँ पे x1 x2 है, then it is x1 x2 whole square, and that this is x1 square x2. Yeah, anybody has a doubt? मैं आपको पूरा जनवरी भी पढ़ाने वाला हूँ, है ना, दिसंबर भी. Fine, so yeah, so basically this is a hypothesis. So we consider this as our hypothesis. Now this is a non-linear hypothesis. You can see this is a polynomial function. But the problem with this is, first of all, only polynomial non-linearity can be tackled. So you think of non-linear functions. So there are not just polynomial functions. There can be, for example, e की power x हो सकता है, या फिर log x हो सकता है, या फिर there can be multiple infinite number of functions. तुम लोगों ने पढ़ा ही है in 11th and 12th in JEE, right? So there can be an infinite number of possible combinations, and so that problem can't be solved with this. Like you can't basically use log x or e to the power x in this kind of thing. You can't learn those things. But and the one more thing is, like when you have a large number of features, मान लो तुम्हारे पास है कि house price is based on what are the number of rooms, what are the number of facilities which are available outside, and then maybe what is the BHK and stuff. So there can be multiple features. मान लो n features है, बहुत सारे features हैं. Then if you try to create a polynomial, then there can be multiple combinations. मैंने 1 की power 2 रख दी, 1 की power 5 रख दी, 1 की power 3 रख दी, ऐसे करके I can create an infinite number of terms. जो polynomial में terms होंगे ना, I can create an infinite number of terms. So जितने ज़्यादा features होंगे, I can
create more number of terms, and उससे our hypothesis will be much longer. It won't be just कि theta naught plus theta 1 x1 plus theta 2 x2. It can be very long hypothesis, ठीक है. So that is a problem because फिर उसमें it will be difficult for us to understand what is the significance of each term, है ना, कि भाई ये x1 x2 है and ये x1 x2 whole square है, so कौन सा we should keep. So there can be infinite number of combinations. So that is the problem with polynomial regression, कि we can't have any other non-linearity apart from polynomial, and it is difficult to understand what kind of polynomial we should take, what kind of polynomial function we should take. So that is the thing. So that is why polynomial regression can be a solution, but it isn't a full solution. So that is why we use neural networks. So neural networks are a very important topic. That is why they were introduced, because normal linear regression or polynomial regression can't, understand the non-linearity between data. So if you want to capture non-linearity between data points, you need to use neural networks. So this is exactly what a neural network is. So तुमने पढ़ा होगा, in brain you have a neural network which has neurons, and neurons are interconnected to each other. ठीक है? So basically you can see this is a neural network. ठीक है? These are input neurons, these are hidden neurons, and these are output neurons. So I'll explain what these are in a second. So you can think of it like it tries to predict something. Like it has some input, it tries to predict some output, and then what it does, it says, okay, that I've got an output and this is something wrong. Okay, so I might not have predicted the thing correctly. So it understands, okay, that there is some difference in my output and what I wanted it to be. So if I wanted a image of a cat should be classified as a cat, and I predicted that it is a dog, that kind of error, it will see, okay, that this is an error. I need to change my network or change my neural network such that it is able to predict what exactly the image is, which is a cat. So this is what a neural network is. So I start off with what exactly is a neuron. So the neuron is the building block of a neural network. So you can see here, abhi initially in linear regression also you would have studied that कुछ नहीं है, it is just a linear combination of x1, x2, x3. तो मान लो तीन features हैं तुम्हारे पास, x1, x2, x3. You just multiply them with some factors. So this is w1, this is w2, this is w3. ठीक है? So the output is w1 x1 plus w2 x2 plus w3 x3. ठीक है? And after that, so you can see here you have three input features, x1, x2, x3. So अभी हम लोग पैरामीटर्स, तो जब तुमने जो ग्रेडियंट डिसेंट में पैरामीटर्स पढ़े होंगे लाइक इन लीनियर रिग्रेशन, वो थीटा के फॉर्म में होंगे ना. सो इधर ये है कि यहाँ पे x1, x2, x3 है, एंड उसको वील सी द पैरामीटर्स एज थीटा. सो थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 आर 3 पैरामीटर्स. तो उनको बेसिकली कर दिया थीटा 1 x1 प्लस थीटा 2 x2 प्लस थीटा 3 x3. तुमने तीन इनपुट फीचर्स डाले थे x1, x2, x3. थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 से मल्टीप्लाई करके सम कर दिया, एंड उसमें एक g फंक्शन लगा दिया. अब g क्या है? सो g इज कॉल्ड एक्टिवेशन फंक्शन. वो बाद में सिखाऊंगा कि क्या होता है एक्टिवेशन फंक्शन, बट g कैन बी एनी नॉन लीनियर फंक्शन. थिंक ऑफ इट एज थीटा 1, थीटा x1 प्लस थीटा 2 x2 प्लस थीटा 3 x3 तो कर लिया, बट उसका आउटपुट में मैं स्क्वायर भी कर सकता हूँ, उसको क्यूबिक फंक्शन भी लगा सकता हूँ, सिग्मॉइड फंक्शन भी लगा सकता हूँ. कुछ भी सिग्मॉइड फंक्शन तो तुमने पढ़ा होगा लास्ट क्लास में कि 1/1 प्लस e की पावर माइनस z होता है. सो you can sort of have any kind of non-linear function in a particular neuron. So अब तुमने ये समझ में आ गया कि like न्यूरॉन क्या होता है, कि उसमें बस कुछ नहीं होता, कुछ इनपुट्स जाते हैं, कुछ आउटपुट आते हैं, एंड वो बेसिकली ऐसे आता है कि थीटा 1 x1 कर दिया, थीटा 2 x2 कर दिया, थीटा 3 x3 कर दिया. अब सोचो ज़्यादा होते हैं तो थीटा 5 तक जाते हैं या फिर थीटा n तक जाते हैं, एंड उस पर वी अप्लाइड अ नॉन लीनियर फंक्शन ऑन इट. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अ न्यूरल नेटवर्क इज. सो अब जैसे यहाँ पे देख लो डॉग और कैट की इमेज आई. सो ये जो न्यूरल नेटवर्क में जितने भी सर्कल्स दिख रहे हैं, ईच ऑफ देम इज अ न्यूरॉन. ये एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है. ठीक है? सो एंड ऑल ऑफ दीज न्यूरॉन्स आर इंटरकनेक्टेड. मान लो अब मैं बताता हूँ ये क्या होता है. सो दीज आर लेयर्स. फर्स्ट इज आर इनपुट लेयर, सेकेंड इज आर हिडन लेयर, थर्ड इज आर आउटपुट लेयर. इनपुट लेयर में क्या है कि तीन न्यूरॉन्स हैं विच विल टेक योर इनपुट, जो x1, x2, x3 थी, ये सारे तुम्हारे इनपुट्स लेंगे. ठीक है? फिर हिडन लेयर. सो अब हिडन लेयर में क्या होगा कि कुछ न्यूरॉन्स हैं और उनका वो सारे इनसे कनेक्टेड है, जो ये जो इनपुट लेयर पे जितने भी न्यूरॉन्स हैं उन सबसे कनेक्टेड है. सो यू कैन सी हियर कि इस वाले लेयर से, इस वाले न्यूरॉन से इधर तक कनेक्शन जा रहा है, इस वाले न्यूरॉन से भी फर्स्ट वाले हिडन नोड तक जा रहा है,
और इस वाले से भी इधर तक जा रहा है। सो तीनों इनपुट न्यूरॉन से एक हिडन वाले न्यूरॉन तक इन्फो जा रहा है। सो दैट एग्जैक्टली व्हाट इट इज कि यहाँ से W1 X1 आएगा, यहाँ से W2 X2, यहाँ से W3 X3। तो दिस इज बेसिकली अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द फीचर्स। ठीक है, सो दिस इज अ न्यूरल नेटवर्क। अब ऐसे ही यहाँ पे जब फीचर्स ऐसे बन जाएंगे कि हाँ भाई यहाँ से इनपुट आया, फिर उनको लीनियर मतलब उनमें ये वाला फंक्शन लगाया एंड ये वाली चीज़ बनाई, फिर ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ऐसे करते करते फिर ये चारों पॉइंट्स आ गए इन योर न्यूरॉन्स हिडन लेयर में। तो फिर यू कैन प्रिडिक्ट द आउटपुट। ठीक है, सो दिस एग्जैक्टली इज अ न्यूरल नेटवर्क जिसमें न्यूरॉन्स आर बेसिकली इंटरकनेक्टेड। सो थिंक ऑफ इट एज अ ब्रेन। तुम्हारे पास कुछ न्यूरॉन होता है एंड इट पासिस इंफॉर्मेशन टू अनदर न्यूरॉन, ऐसे इट पासिस ऑन इंफॉर्मेशन टू अनदर न्यूरॉन, ऐसे करते करते न्यूरल नेटवर्क बिल्ड हो जाता है। ठीक है, तो अभी आई विल फोकस ऑन द नोटेशंस। सो फर्स्ट अप दिस इज अ न्यूरल नेटवर्क। तो यहाँ पे ये नोटेशन ध्यान से करना। सो दिस इज A1 A2 A1 A2 A3 एंड A1। तो जो सबस्क्रिप्ट है जो नीचे 1 और 2 बना हुआ है वो बेसिकली उस लेयर का, जैसे ये फर्स्ट लेयर है तो उसमें कौन सा नोड है, ये फर्स्ट नोड है या सेकंड नोड है, तो वो दिखा रहा है। ऐसे ही इसमें फर्स्ट नोड ये है, सेकंड नोड ये है, थर्ड नोड ये है, तो वो दिखा रहा है 1 2 3। और ये जो 1 है वो बेसिकली जो सब ऊपर है सब सुपर स्क्रिप्ट में, वो दिखा रहा है व्हाट इज द लेयर। सो दिस इज द फर्स्ट लेयर, सो दैट इज वाई दिस इज 1, दिस इज 2, दैट इज वाई दिस इज द हिडन सेकंड लेयर, एंड दिस इज 3, यहाँ पे तभी थर्ड लेयर है। नाउ ईच वर्टिकल कॉलम इज अ लेयर ऑफ न्यूरॉन्स। तो वही मैंने बोला कि ये एक लेयर ऑफ न्यूरॉन्स है और ईच न्यूरॉन इज कनेक्टेड, लाइक ईच न्यूरॉन फ्रॉम वन लेयर इज कनेक्टेड टू ऑल न्यूरॉन्स इन द नेक्स्ट लेयर। कि इसमें इस न्यूरॉन इस लेयर में जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो यहाँ पे जितने भी न्यूरॉन्स हैं उन सबसे कनेक्टेड है। तो देख लो जो पहला न्यूरॉन है इट इज कनेक्टेड टू 1 2 3 ऑल 3 न्यूरॉन्स, एंड द सेकंड नोड इज आल्सो कनेक्टेड टू ऑल 3 न्यूरॉन्स। एंड सिमिलरली यहाँ पे जो 3 न्यूरॉन्स है ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड टू दिस न्यूरॉन 1 2 3। ठीक है, सो या फर्स्ट लेयर इनपुट लेयर हो गई, सेकंड लेयर इज हिडन लेयर एंड लास्ट लेयर इज आउटपुट लेयर, एंड दीज आर आर इनपुट फीचर्स। तो तुमने जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन या लीनियर रिग्रेशन में किए कि जो इनपुट फीचर्स तुम बना रहे थे x1 x2, सो दीज आर बेसिकली दोज ओनली A1 1 A2 1। ठीक है, तो न्यू दिस इज व्हाट एग्जैक्टली अ न्यूरल नोटेशंस इन न्यूरल नेटवर्क आर। सो अब थोड़ा मैथ। तो अभी जो पीछे बताया था ये सिंपली वही करना है हर जगह। सो मान लो A12 निकालना है। अब A11 एंड A21 आर योर इनपुट फीचर्स। ठीक है, these are your input features and you need to calculate these neurons in neurons की value. So what you do is कुछ नहीं करना, इन दोनों को लेना है एंड उनको कुछ किसी कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एंड ऐड करना है। अब पीपल विल बी आस्किंग कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस A0। सो A0 अभी इक्वेशन तो तुम्हें समझ में आ रही हो कि दिस इज A11 दिस इज A21 एंड आई हैव बेसिकली मल्टीप्लाइड देम विद सम कोएफिशिएंट। ठीक है, बट व्हाट इज एग्जैक्टली दिस A0? सो A01 इज बेसिकली बायस टर्म। सो तो जो तुमने लीनियर रिग्रेशन में पढ़ा होगा कि एक बी टर्म आता है कि थीटा नॉट प्लस थीटा 1 x1 प्लस थीटा 2 x2, है ना। सो दैट थीटा नॉट मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ एंड दिस A0 विल ऑलवेज बी 1, है ना। सो दिस एग्जैक्टली व्हाट दिस इज। सो A01 इज बेसिकली ऑलवेज 1 एंड बेसिकली ये इसलिए यूज होता है जिसको कोई कांस्टेंट टर्म ऐड करना हो। इफ यू वांट टू ऐड सम कांस्टेंट टर्म देन यू कैन ऐड इट यूजिंग थीटा 101। अब इसकी भी नोटेशन एक बार समझ लेते हैं। सो थीटा इज बेसिकली द पैरामीटर्स। तो जो तुमने लीनियर रिग्रेशन में पढ़ा था कि दीज आर द पैरामीटर्स ऑफ लीनियर रिग्रेशन थीटा एंड थीटा 2, इट्स एग्जैक्टली द सेम। अब उसमें जो थीटा में जो सब्सक्रिप्ट में है 10, सो 1 इज बेसिकली परफॉर्मिंग की कौन से नोड तक जा रहा है। जैसे मेरे को A1 कैलकुलेट करना है तो मैं थीटा 1 में लिखूंगा, यहाँ पे थीटा 1 लिखा, यहाँ पे थीटा 1 लिखा, बट मैं कौन सा वाला नोड यूज़ कर रहा हूँ। जैसे मेरे को ये वाला नोड बनाना था एंड उससे पहले मैं ये वाला और ये वाला नोड यूज़ करता हूँ, तो मैंने 1 लिख दिया थीटा 1 एंड मैंने 2 लिख दिया थीटा 1 2। ठीक है, सो ऐसे ही मैंने लिख दिया कि ओके आई वांट टू क्रिएट A12, आई वांट टू क्रिएट इट फ्रॉम A11 एंड आई वांट टू क्रिएट इट फ्रॉम A21, सो 1 and 2। एंड सिमिलरली क्योंकि मेरा बायस टर्म है A01, सो आई यूज 0 वाला नोटेशन हियर। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली A12 कैसे फॉर्म हुआ एंड ऑब्वियसली एक जी एक्टिवेशन फंक्शन। सो एज सिंपल एज जो यहाँ पे किया था वही एग्जैक्टली यहाँ पे किया है, बस नोटेशन चेंज होगी। तो नोटेशन का एक बार ध्यान रख लेना और जस्ट गो थ्रू द स्लाइड्स अगर बाद में ज़रूरत पड़ी या फिर रिकॉर्डिंग के थ्रू।
सिमिलरली जैसे A22 बनाना है मुझे, सो थीटा 2 है क्योंकि मेरे को सेकेंड नोड बनाना है, एंड देन आई क्रिएटेड फ्रॉम द जीरोथ नोड, तो 0 लिखा, फिर आई क्रिएटेड फ्रॉम द फर्स्ट नोड, तो मैंने 1 लिखा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही 2 लिखा यहाँ पे, और ये सब पे ऊपर सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट 1 इसलिए क्योंकि दिस इज क्रिएटेड फ्रॉम लेयर 1, मतलब मैं फर्स्ट लेयर से सेकेंड लेयर में जा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे ये फर्स्ट लिखा है, ये सुपरस्क्रिप्ट है, ठीक है। तो दिस एग्जैक्टली इज व्हाट हाउ वी क्रिएट द सेकेंड लेयर या हिडन लेयर। अब मैट्रिक्स फॉर्म में चले जाएं, अब इसी को मेरे को अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना हो मान लो, तो कुछ नहीं है, θ10 θ11 θ12, ये क्या होगा कि अच्छा मेरे को A12 A1 A2 और A3 ये जो तीन चीज़ें हैं वो बनानी है, ये वाली, तो मैं उसी के लिए कोएफिशिएंट्स लिख दूंगा कि θ10 θ11 θ12 θ20 θ21 θ22 एंड θ30 θ31 θ32, कि कैसे वो बना रहे हैं, हाउ एम आई मेकिंग दोज थिंग्स, एंड A01 A12 A0 A1 A2 आर बेसिकली द फर्स्ट लेयर, की जो कौन सी फर्स्ट लेयर की जो वैल्यूज थी वो एग्जैक्टली वही है, ठीक है। सो A0 A1 A2 एग्जैक्टली दोज, एंड A0 अभी फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, A0 इज 1 बेसिकली कांस्टेंट है, वो बस इसलिए लिखा है जस्ट फॉर नोटेशन पर्पसेस, तो बस कुछ नहीं करना। अब इसको तुम सॉल्व करोगे, मैं अभी यहाँ पे दिखाने रहा कैसे हुआ है, बट या तुम बस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें दिख रहा है θ10 A0 प्लस θ11 A1 प्लस θ12 A2 इज इक्वल टू x1, ठीक है। और उस पर हमें ये भी था कि यहाँ पे एक जी लीनियर फंक्शन, नॉन लीनियर फंक्शन, एक्टिवेशन फंक्शन भी लगाना था ना, तो दैट एग्जैक्टली इज दिस जी, ये जो भी आया इस पे हमने एक जी नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन लगा दिया, एंड वी गेट योर A1 A2 A3 विच आर दी एक्टिवेशंस हियर, ठीक है। तो अब तुम्हें इसमें कुछ दिख रहा है, लाइक यहाँ पे मेरे पास 2 नोड्स थे एंड यहाँ पे मेरे पास 3 नोड्स थे, है ना। तो इसका मेरा डायमेंशन कैसा बना, यहाँ पे 3 इनपुट न्यूरॉन्स थे, अब यहाँ पे 3 इनपुट न्यूरॉन्स क्यों थे, यहाँ पे A1 A2 था, साथ में एक 1 था, दैट इज यहाँ पे 3 इनपुट न्यूरॉन्स थे, ठीक है, हम 1 को भी यूज करते हैं, एंड देन 3 आउटपुट न्यूरॉन्स बना रहे हैं। सो आर आउट मैट्रिक्स, जो ये थीटा मैट्रिक्स है, दैट इज ऑफ साइज 3x3, दिस इज आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट है, एंड दिस इज इनपुट, लाइक ये वाला जो पार्ट है ये इनपुट नंबर होगा एंड ये आउटपुट नंबर होगा। सो इन जनरल डायमेंशन ऐसे ही होता है कि अगर मान लो मेरा पास लेयर आई है, आई हैव लेयर आई विच हैज एस आई न्यूरॉन्स, ठीक है, एंड आई हैव लेयर I+1 विच इज Si+1 न्यूरॉन्स, देन द डायमेंशन विल बी Si+1 इंटू Si+1। तो अगर इसका वो इंटुएशन है तो Si+1 मतलब ये वाला जो है, इट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ आउटपुट न्यूरॉन्स, कि मेरे को 3 न्यूरॉन चाहिए थे, सो दिस डायमेंशन विल बी 3। फॉर एग्जाम्पल मेरे को 4 चाहिए होते या 5 चाहिए होते, तो दिस डायमेंशन विल बी 5, ठीक है। उसके बाद Si+1 मतलब मेरे पास यहाँ पे जो प्रीवियस लेयर थी मतलब ये वाली, उसमें कितने न्यूरॉन्स थे, सो आई हैड 2 न्यूरॉन्स, ठीक है। सो यहाँ पे दिस डायमेंशन विल बी 2+1, 2+1 क्यों, क्योंकि एक बायस टर्म भी आता है जो मैंने बताया अभी, जो कांस्टेंट 1 रहता है, सो दैट इज वाई अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल इनपुट में 3 न्यूरॉन्स होते, ठीक है, सो दी इनपुट वुड हैव बीन यहाँ पे 4 वो होता है डायमेंशन, ठीक है, क्योंकि 3 न्यूरॉन्स प्लस एक बायस के लिए तो 4 डायमेंशन होता है यहाँ। तो ये जो अभी बताया ना मैंने कि ये सब इक्वेशंस फॉलो हो रही हैं एंड ये कैलकुलेशन मैट्रिक्स फॉर्मेट में हो रहा है, सो ये बस मैट्रिक्स फॉर्मेट में ही है यही चीज़, ठीक है। सो ये सब जो हो रहा है, दिस इज ऑल कॉल्ड फॉरवर्ड प्रोपगेशन, wherein you have some input and you propagate it further into your neural network, कि भाई मैंने एक लेयर कैलकुलेट की, then I calculate the next layer, then I calculate the next layer and so on, and you keep on calculating till you get to the output, ठीक है। This is called forward propagation, you propagate your features। So intuition wise ऐसा है कि like for example I had some feature here and I had some feature here input में, so this neural network in this layer will be able to learn some new features, कुछ नए features learn करेगा which will be मतलब मे बी हमें इंटरप्रेटेबल ना हो, कि ह्यूमंस नहीं बता पाए कि फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ रूम्स है एंड फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ फैसिलिटीज आउटसाइड है एक हाउस प्राइस प्रेडिक्शन के लिए, सो इट ट्राइज टू फाइंड सम सॉर्ट ऑफ फीचर जो उनकी तरह हो और बेटर मेरे को लाइक जो आउटपुट है उसको बेटर प्रिडिक्ट कर पा रहा है, कि लाइक इट इज़ अ बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ माई इनपुट, वो लर्न करने की कोशिश करता है ये वाला जो लेयर्स हैं। सो दैट इज वाई हम हिडन लेयर्स करते हैं कि डायरेक्टली इन पे ना काम करें, रादर हम कुछ फीचर्स बनाएं विच कैन बी लर्न फ्रॉम
these initial features, ठीक है. So ये वाले features इससे learn होंगे. बट अब इसमें यही इशू है कि मैंने ये तो बता दिया कि यहाँ पे ये सब हो रहा है, ठीक है. मैं फॉरवर्ड वेट्स डाल रहा हूँ एंड इससे ये कैलकुलेट कर रहा हूँ, इससे ये कैलकुलेट कर रहा हूँ. बट इसमें लर्निंग कमी, मशीन लर्निंग तो आई नहीं अभी इसमें. सो इसी में अब जैसे फॉरवर्ड प्रोपगेशन की बात की थी, नाउ विल टॉक अबाउट बैक प्रोपगेशन. तो अब जैसे कैलकुलेट कर लिया कि हाँ भाई इनपुट ये है, आउटपुट ये है. नाउ मेरे को कैसे फाइंड आउट करना है कि व्हाट आर द बेस्ट वेट्स विच कैन बी यूज्ड इन प्रिडिक्शन. तो मैंने यही किया था ना कि यहाँ पे बस ये वेट से मल्टीप्लाई किया और आउटपुट दे दिया. बट अब ये वेट्स क्या होने चाहिए, मैंने तो ये बताया नहीं कि वेट्स क्या होने चाहिए एग्जैक्टली, ठीक है. सो वो वेट्स मेरे को डिटरमाइन करने, और ग्रेडियंट डिसेंट में तुमने देखा होगा कि वेट्स ऐसे डिटरमाइन करते हैं कि थीटा माइनस अल्फा ग्रेडियंट लेते हैं सॉर्ट ऑफ, है ना. एंड पैरामीटर्स ऑप्टिमाइज करते हैं इन लीनियर रिग्रेशन एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन टू गेट द बेस्ट फिट. तो इसमें भी वही करना है, ये जितने भी पैरामीटर्स हैं उन सबको ऑप्टिमाइज करना है, बेस्ट पैरामीटर ढूंढना है हमें, ठीक है. और वो बेस्ट पैरामीटर ढूंढने के लिए हम बैक प्रोपगेशन लगाते हैं, ठीक है. सो इंट्यूएशन ये है कि जैसे आउटपुट आया, मैंने पूरा फॉरवर्ड प्रोपगेशन लगाया, ठीक है, एंड मेरा कुछ आउटपुट आया. नाउ व्हाट आई वांट टू सी इज कि मेरा जो आउटपुट आया और जो एक्चुअल आउटपुट था, ठीक है, जो एक्चुअल आउटपुट आना चाहिए था, मान लो मैंने इमेज डाली किसी डॉग की या किसी कैट की और मेरा आउटपुट आया कि हाँ ये डॉग है, एंड एक्चुअली आना चाहिए था कि नो दिस इज अ कैट, राइट. सो दैट डिफरेंस इन डिजायर्ड वैल्यूज वो देखेगा कि ओके देयर इज सम डिफरेंस इन डिजायर्ड वैल्यूज. अब वो जो डिफरेंस आएगा इन डिजायर्ड वैल्यूज की, भाई हाँ मेरा डिजायर्ड ये था कि ये कैट प्रेडिक्ट करे, बट आई गॉट दैट इट इज अ डॉग, सो दैट डिफरेंस इज बैक प्रोपगेटेड, ठीक है, टू दिस हिडन लेयर. तो ये बैक प्रोपगेट हो गया इस हिडन लेयर तक, एंड देन ये प्रोपगेट हो गया इस हिडन लेयर तक, ठीक है, एंड देन ये प्रोपगेट हो गया इनपुट लेयर तक. सो ऐसे प्रोपगेशन का मेरा ये मतलब है कि जो वेट्स हैं यहाँ पे, लाइक फ्रॉम दिस न्यूरॉन इट इज कनेक्टेड टू दिस न्यूरॉन, दिस न्यूरॉन इज कनेक्टेड टू दिस न्यूरॉन, दिस कनेक्टेड न्यूरॉन इज कनेक्टेड टू दिस न्यूरॉन. तो ये जो वेट्स हैं वो चेंज हो, तो ये वेट्स चेंज हुआ तो ये मेरा हिडन लेयर की वैल्यूज चेंज हुई. फिर ये वाला मेरा वो चेंज हुआ बेसिकली, लाइक वेट्स, ठीक है. ऐसे ही मेरी ये वेट्स चेंज हुई, तो ऐसे वो वेट्स सॉर्ट ऑफ बैक प्रोपगेट होती हैं कि इसमें डिफरेंस आया तो मैं वेट्स चेंज करूंगा, फिर इसमें डिफरेंस आया तो मैं और वेट्स चेंज करूंगा, ऐसे, ठीक है. सो दैट इज बेसिकली द आइडिया दैट यू कीप ऑन चेंजिंग द वेट्स बाय बैक प्रोपगेटिंग. तो अब थोड़ी मैथ आएगी एंड हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आए मैथ, बट ऐसा कुछ नहीं है. तुम लोग ऑनलाइन लाइक प्रेजेंटेशन तो है ही, तुम लोग उसमें से देख लेना अगर बाद में तुम्हें लगता है कि नहीं आ रहा समझ, ठीक है. तो बट ये है कि अच्छे से समझ लेना, बिकॉज ये नहीं समझ आएगा तो फिर मशीन लर्निंग में कुछ समझ नहीं आने वाला, ठीक है. तो बैक प्रोपगेशन का सिंपल फंडा है. सो ये न्यूरल नेटवर्क बनाया हुआ है मैंने, 2 न्यूरॉन्स, 3 न्यूरॉन, 1 न्यूरॉन का, ठीक है. अब वाई मेरी ट्रू वैल्यूज है और वाई हैट को मैं बोल रहा हूँ कि प्रिडिक्शन है मेरी, कि कोई भी मैंने न्यूरल नेटवर्क की प्रिडिक्शन की तो वो वाई हैट बोल रहा हूँ, एंड वाई को मैं ट्रू वैल्यूज बोल रहा हूँ, ठीक है, जो होनी चाहिए. अब जे थीटा जो कॉस्ट फंक्शन है, तो तुमने लास्ट वीक में पढ़ा होगा कॉस्ट फंक्शन इज बेसिकली दिस फंक्शन वाई लॉग वाई हैट प्लस 1 - y log 1 - y हैट, ठीक है. सो दिस इज माई लॉस्ट फंक्शन इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में पढ़ा होगा ये. तो मैं वही कर रहा हूँ कि आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन में मान रहा हूँ ये मेरा लॉस फंक्शन है, ये मेरा वाई था, ये मेरा वाई हैट था. अब मेरे को ऑप्टिमाइज करना है, ये थीटा ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है. तो मान लो थीटा 1 1, थीटा 1 1 क्या है, इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन तक मेरा वेट है बेसिकली, ये मेरे को मान लो ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है. तो हम अब ग्रेडियंट डिसेंट ही यूज करेंगे, बट ग्रेडियंट डिसेंट के लिए व्हाट इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट, इट इज ग्रेडियंट. ग्रेडियंट क्या है, डेल मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ द कॉस्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर पैरामीटर, कि जो भी मेरे को थीटा अपडेट करना है या पैरामीटर अपडेट करना है उसके रिस्पेक्ट में मैंने कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया और उसके हिसाब से मैंने अपडेट कर लिया अपना पैरामीटर, ठीक है. सो यही मैंने कैलकुलेट किया यहाँ पे डेल जे बाई डेल थीटा, ठीक है. तो अब डेल जे बाई डेल थीटा इज बेसिकली डेल जे बाई डेल एक्स बाई इंटू डेल एक्स बाई डेल थीटा. तो अब है क्या ये डेल एक्स क्या है, तो मुझे लग रहा हो कि यार ये क्या आ गया. सो बेसिकली एक तो चीज़ समझ आ रही है, दिस इज चेन रूल, सिंपल, लाइक 12th में भी पढ़ा होगा, चेन रूल है कि डेल जे बाई डेल थीटा इज इक्वल टू डेल जे बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल थीटा. अब डेल एक्स इज बेसिकली ये जो आउटपुट था ना,
सो आउटपुट में तुमने देखा होगा कि लाइक यहाँ पे जो मैंने जी फंक्शन लगाया था, सो जी फंक्शन से पहले जो ये इनपुट है, जो ये आया मेरा थीटा से मल्टीप्लाई करके, इस सम को हम एक्स बोलते हैं। तो मान लो इसको हमने एक्स बोला, ठीक है, और उस पर नॉन लीनियर फंक्शन लगाया एक जी, ठीक है, तो मेरा आउटपुट आया ए, ठीक है, और वो ए को ही मैं वाई हैट बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा मान लो कि मैंने नॉन लीनियर फंक्शन नहीं लगाया यहाँ पे, तो मेरा बस ये जो डेल जे बाई डेल थीटा हुआ वो होगा डेल जे बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल थीटा। और मैंने ऐसा क्यों किया, उसको एक्स में क्यों ब्रेक किया, सो तुम खुद ही सोचो। जो आउटपुट आ रहा है मेरा वाई हैट, ठीक है, वो बेसिकली ए लाइक वो किस पे डिपेंडेंट है, मेरा जो इनपुट मतलब एक्टिवेशन फंक्शन से पहले जो भी चीज़ आ रही है उस पर डिपेंडेंट है। सो जो मेरा एक्टिवेशन फंक्शन से पहले जो इनपुट आता है थीटा नॉट थीटा वन वन एक्स वन प्लस थीटा वन वन ए वन प्लस थीटा वन टू ए टू प्लस थीटा वन थ्री ए थ्री, उस पर डिपेंडेंट है। तो इसलिए मैंने उसको उसमें ब्रेक किया, बिकॉज अगर तुम देखो यहाँ पे मेरा अगर ये x है, ये वाला चीज़ मेरा x है, तो मैं इसको आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ डेल बाय डेल थीटा। तो मेरे को अगर डेल बाय डेल थीटा निकालना है तो डेल बाय डेल थीटा किया, और अगर मैं सिर्फ इसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, मान लो थीटा वन जीरो के रिस्पेक्ट में, तो मेरा पास कुछ नहीं बचा है, ए नॉट बचा है ना। सो दैट इज वाई फॉर ईज ऑफ यूज ये यूज किया, ठीक है। सो नाउ इधर थे हम लोग, सो या डेल जे बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल थीटा। नाउ एक्स को जैसे मैंने पहले ही बोला था, इट इज़ बेसिकली अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ जितने भी फीचर्स हैं, ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री, उन सब का बेसिकली मल्टीप्लाई कर दिया एक पैरामीटर से। वो जो पैरामीटर्स हमें ऑप्टिमाइज करने हैं, तो मान लो डेल जे बाई डेल थीटा वन निकालना है, और ये थीटा वन ये वाला है, ठीक है। तो डेल जे बाई डेल ए वन थ्री, सो ए वन थ्री मेरा क्या था, ए वन थ्री बेसिकली मेरा वाई हैट था, प्रिडिक्शन, ठीक है, मैंने क्या प्रिडिक्ट किया वो उसी को मैं ए वन थ्री बोल रहा हूँ। सो अब मेरा लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रिडिक्शन तो है, तो मैंने उसको प्रिडिक्शन के रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव ले लिया। फिर वो प्रिडिक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन थ्री, बिकॉज एक्स वन थ्री और ए वन थ्री में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक नॉन लीनियर फंक्शन एक्स्ट्रा लगा दिया, और फिर एक्स वन थ्री बाय थीटा वन। तो बेसिकली उसी को और एक्सपैंड कर दिया कि यहाँ पे डेल्टा जे बाई डेल्टा एक्स जो था उसको भी मैं डायरेक्टली नहीं निकाल सकता, बिकॉज यहाँ पे कोई एक्स नहीं है ना, यहाँ पे वाई हैट है। तो बस कुछ नहीं, यहाँ पे डेल जे बाई डेल ए कर दिया, और यहाँ डेल ए बाई डेल एक्स कर दिया चेन रूल लगा के, एंड ए स्टिल मेरा वाई हैट ही है। तो वही किया, डेल जे बाई डेल वाई हैट, डेल वाई हैट बाय डेल एक्स वन एंड डेल एक्स वन बाय डेल थीटा। और अब वाई हैट, क्योंकि वाई हैट जो है वो सिंपली सिग्मॉइड फंक्शन है, क्योंकि मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, आई एम कंसिडरिंग कि इट इज वी आर यूजिंग क्लासिफिकेशन। तो जी इज बेसिकली सिग्मॉइड फंक्शन ऑन एक्स वन थ्री, कि जो भी आउटपुट आया था थीटा वन जीरो प्लस थीटा टू जीरो ऐसा करके पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन बड़ा सा इक्वेशन आया था, उसमें बस मैंने एक जी फंक्शन लगा दिया विच इज माई आउटपुट प्रिडिक्शन। सो दिस इज बेसिकली, अब उसी को मैं बस प्लग इन कर रहा हूँ। तो बाय डेल बाय डेल एक्स ऑफ जी, और डेल एक्स बाय डेल थीटा, एंड डेल जे बाय डेल वाई हैट, ये सब बस प्लग इन करना है। एंड अब मैं डेरिवेशन के थ्रू जाऊंगा नहीं, बिकॉज लाइक तुम लोग देख ही सकते हो, बट किसी को और लाइक कुछ पूछना वो हो कि कैसे और डिराइव हो रहा है, तो तुम प्रेजेंटेशन देख लेना। बट यही प्रेजेंटेशन फिर उसको मैं पूरा डिराइव करता हूँ कि डेल जे बाई डेल वाई हैट क्या आ रहा है लॉस फंक्शन के रिस्पेक्ट में, ये सब होता है, ठीक है। सो आउटपुट बेसिकली ये आता है, दिस इज माई आउटपुट कि डेल जे बाई डेल थीटा वन वन इज बेसिकली वाई हैट माइनस वाई। सो वाई हैट मेरा क्या था, प्रिडिक्शन था, एंड वाई मेरी ट्रू वैल्यूज थी, ठीक है। सो बेसिकली उनका डिफरेंस ले लिया, एंड आई मल्टीप्लाइड देम विद डेल एक्स बाई डेल थीटा। तो अभी भी ये वाला डिफरेंशिएशन कैलकुलेट नहीं किया है, ठीक है, वाई हैट माइनस वाई आ गया, बट ये वाला डिफरेंशिएशन कैलकुलेट नहीं किया है। अगर उसको करते हैं, सो आई विल गेट कि डेल बाई डेल थीटा ऑफ थीटा वन वन, और इस पूरे का मेरे को करना है डिफरेंशिएशन। तो तुम देखो थीटा वन वन खुद से इट इजंट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, द ओनली टर्म इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इज सेकेंड टर्म। तो ये सब तो जीरो हो जाएगा, बस बचेगा ए वन टू। सो दिस इज ए वन टू, ठीक है। सो डेल जे बाई डेल थीटा इज वाई हैट माइनस वाई। सो यहाँ पे जो वाई हैट माइनस वाई है इंटू ए वन, ठीक है। तो
तो अब द आइडिया कि जो मैं बैक प्रोपगेशन में जो पैरामीटर्स अपडेट किया है डेल लाइक जो ग्रेडेड निकाला है वो कैसा फॉर्म का है, जो मेरा आउटपुट में डिफरेंस आया कि आउटपुट और प्रेडिक्शन में जो डिफरेंस आया मल्टीप्लाइड बाय दिस एक्टिवेशन वैल्यू, मतलब जो न्यूरल नेटवर्क में एक न्यूरॉन का वैल्यू था उससे। तो तुम सोच सकते हो कि अगर मेरा ज़्यादा आएगा, मान लो कि प्रिडिक्शन और ट्रू वैल्यू में ज़्यादा डिफरेंस आ गया, तो ये ग्रेडियंट बहुत बड़ा होगा, ठीक है। और फिर ये और ऐसी जितना बड़ा होगा ये डिफरेंस उतना बड़ा ग्रेडियंट होगा, और उतना बड़ा ग्रेडियंट डिसेंट में स्टेप लेंगे। सो दैट एग्जैक्टली व्हाट इट इज। अब अगर मेरे को विद रिस्पेक्ट टू A1 लेना हो, मान लो कि मैंने इसके टर्म में तो ले लिया कि हाँ भाई वेट क्या होना है, बट फिर इन वाले वेट्स के लिए कैसे करूँगा जो पिछले लेयर के हैं। तो कुछ नहीं करना, इसके लिए निकालना है विद रिस्पेक्ट टू दिस न्यूरॉन कि इसको कैसे चेंज करना चाहिए, डेल जे बाय मतलब इसका इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लेना, फिर इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लेना, वही चेन रूल लगाते रहो। तुम चेन रूल लगाते रहोगे तो वो पीछे बैक प्रोपगेशन होता रहेगा। एक्चुअली इस बैक प्रोपगेशन बाकी मैं बोलूँगा कि और इसमें जब डिटेल में जाना होगा तो एक बार ये प्रेजेंटेशन की वो देख लेना स्लाइड्स एंड उनका मैथ एक बार समझ लेना। बाकी उतना वो नहीं है कि क्या कहते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, तुमने 12th में चेन रूल पढ़ा है तो उतने से हो जाना चाहिए। बाकी वही ग्रेडियंट आ गया, उसके बाद उसको सिंपली ग्रेडियंट डिसेंट से ऑप्टिमाइज करना है। तो बेसिकली अभी तक हमने ये देखा कि एक न्यूरल नेटवर्क है, उसमें कुछ न्यूरॉन्स है, उससे एक फॉरवर्ड प्रोपगेशन हो रहा है जिससे हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि हाँ भाई इनपुट ये था, आउटपुट ये आया। और फिर अब हमने जो आउटपुट आया उसमें देखा कि कितना डिफरेंस था, एंड हमने फिर उसको बैक प्रोपगेशन लगाया उस पर कि कितने से हमें बाकी पैरामीटर्स चेंज करने चाहिए, ठीक है। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज ग्रेडियंट डिसेंट। एंड अब तुमने देखा होगा कि यहाँ पे हमारे पास बस 3 लेयर्स थी, है ना, 1 2 एंड 3। बट इन डीप लर्निंग या न्यूरल नेटवर्क्स जनरली वी नीड मच मोर डीपर लेयर्स। की बाई डीपर आई मीन कि बहुत सारे लेयर्स चाहिए होते हैं, सिंपली 3 लेयर्स से काम नहीं चलता। लाइक यू माइट हैव 5 6 7, बहुत सारे लेयर्स हो सकते हैं। सो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इज इस जो इवेंट जिस पे बेस्ड है मुझे डीप न्यूरल नेटवर्क्स पे बेस्ड है मोस्टली। सो फर्स्ट अभी जैसे न्यूरॉन समझा, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूरल नेटवर्क की एक न्यूरॉन क्या होता है, उसमें इनपुट आता है आउटपुट आता है। शैलो न्यूरल नेटवर्क होता है जिसमें सिर्फ एक हिडन लेयर होती है, तो जिसमें सिर्फ 3 लेयर होंगी, एक इनपुट एक आउटपुट और एक हिडन लेयर, दैट इज कॉल्ड अ शैलो न्यूरल नेटवर्क। एंड अ डीप न्यूरल नेटवर्क इज व्हेन यू हैव मल्टीपल हिडन लेयर्स की 2 3 4 बहुत सारी हिडन लेयर्स हो गई, तब जाके डीप न्यूरल नेटवर्क। सो व्हाट एग्जैक्टली इज डीप लर्निंग? सो वो ये है कि डीप न्यूरल नेटवर्क्स अगर हमने बनाए हैं एंड वी यूटिलाइज दिस, मतलब जो हमने अभी पूरा फॉरवर्ड प्रोपगेशन बैक प्रोपगेशन देखा, वी यूज दिस ऑन डीप न्यूरल नेटवर्क्स, नॉट ऑन जस्ट 1 2 लेयर वाले, बट बहुत सारे लेयर्स पे लगाए। सो दैट एग्जैक्टली इज डीप लर्निंग। एंड या ये बहुत यूजफुल होती है रेकग्निशन, स्पीच जनरेशन, ये सब में। तो अब एक दो चीज़ें और हैं जो बतानी है, एक्टिवेशन फंक्शंस। तो एक्टिवेशन फंक्शन अभी तुमने देखा था कि कोई भी न्यूरॉन में जो आउटपुट आता है उसमें कुछ नॉन लीनियर फंक्शन लगाना होता है ना, तो दैट इज अ नॉन लीनियर फंक्शन विच इज अप्लाइड टू सम न्यूरॉन आउटपुट, ठीक है। एंड तुमने ऑलरेडी एक देख रखा है ऐसा एक्टिवेशन फंक्शन विच इज सिग्मॉइड। सो कुछ और एक्टिवेशन फंक्शंस है, आई विल गो थ्रू देम ब्रीफली। फर्स्ट इज सिग्मॉइड फंक्शन। सिग्मॉइड तो तुमने देखा है तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, इट इज बेसिकली 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस है। आउटपुट जब भी 0 और 1 के बीच में चाहिए होता है तब ये यूज होता है, एंड जनरली यूज इन बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ इफ फॉर एग्जांपल तुम्हें मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन करना है, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन से मेरा मतलब ये है कि तुम्हारा कुछ चीज़ है जो 5 6 चीज़ें हो सकता है। इट कैन बी अ कैट, इट कैन बी अ डॉग, इट कैन बी एन एलिफेंट, इट कैन बी अ हॉर्स, इट कैन बी अ जिराफ, ठीक है। तुम्हारी कोई इमेज ऐसी है और तुम्हें सबकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हाँ भाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग अ डॉग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इमेज बीइंग अ कैट, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। सो दैट एग्जैक्टली इज व्हाट सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन इज। कुछ नहीं किया, ई टू द, सो जो भी यहाँ पे इनपुट आया उसमें मैंने ये किया कि ई टू द पावर जैसे 1.3 आया, सो ई टू द पावर 1.3 डिवाइडेड बाय सबका सम, सो ई डिवाइडेड बाय ई टू द पावर 1.3 प्लस ई टू द पावर 5.1 प्लस ई टू द पावर 2.2 प्लस ई टू द पावर 0.7 प्लस ई टू द पावर 1.1। तो ऐसे इंश्योर होता है कि इन सबका प्रोबेबिलिटीज का सम
1 है, तुम देख लो 2, 92, 97, 98 and 100, so 1 बन गया. So this is generally used in multi-class classification problem कि different classes हो सकती है एक ही चीज. लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन, लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन कुछ नहीं है, जो इनपुट है उसको आउटपुट पास कर दो, सिंपल. रीलू, सो रीलू में क्या होता है कि मैक्स ऑफ 0 एंड जेड लेते हैं. सो क्या होता है कि कभी कभी इन फॉर एग्जांपल इमेज क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम या कुछ, तुम्हारी वैल्यूज नेगेटिव हो ही नहीं सकती ना. लाइक यू ऑलवेज वांट योर न्यूरल नेटवर्क टू वर्क विद पॉजिटिव वैल्यूज, कि मेरा हाउस का प्राइस कभी नेगेटिव नहीं होगा, या फिर मेरा इमेज की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती. आगे पढ़ाएंगे कि इमेज में जो इतने पिक्सल्स होते हैं उनकी वैल्यूज कभी नेगेटिव नहीं होती. सो दैट इज वाई इट इज यूज कि हाँ, अगर तुम्हारा आउटपुट पॉजिटिव है, लाइक जो भी इनपुट है वो इनपुट अगर पॉजिटिव है तो कीप इट एज इट इज, बट अगर वो नेगेटिव है तो उसको जीरो कर दो. ठीक है, सो दैट एग्जैक्टली इज व्हाट ReLU इज. ठीक है, बाकी ऑप्टिमाइजर्स, सो ऑप्टिमाइजर्स में यू वुड हैव स्टडीड अबाउट ग्रेडियंट डिसेंट. ठीक है, सो डिफरेंट टाइप के ऑप्टिमाइजर्स होते हैं, ये तुम लोग पढ़ लेना. लाइक स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट होता है, एडम होता है, मोमेंटम होता है, RMS प्रॉब होता है. ठीक है, ये 4 इंपॉर्टेंट वो होते हैं, और इसमें लाइक तुम्हें अगर मूड है तो पढ़ लेना, बट इट इज़ नॉट like very important as such. Like most of them at your level will work similar, but yeah, you can just check इन सब का. But अब like काफ़ी like theory हो गई, काफ़ी math हो गई, so now we will be basically showing you how to implement all this, like neural networks कैसे implement होते हैं वो सब दिखाएंगे. Yeah. पहले किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो. Any questions या फिर No, कोई क्वेश्चन नहीं. okay, ठीक है तरुण, then you can I guess start with the implementation part. Yeah, am I audible? Yeah, you're audible. Is my screen visible? Yeah, it's visible. Yeah, okay. So yeah, so just implement a small neural network in, let's say, PyTorch. So yeah, so we'll be using an inbuilt data set in PyTorch, which is called Cipher 10. So here you can see this example, like it has 10 classes, and some of these images in the class it's given over here. Okay, so let's start by importing the data set. So when you're so I told you already that PyTorch has this inbuilt data set, so it's not always that when you go into competitions that the data set is already given, so you have to load it externally. So those and all will be showing it in the next workshop. So like these what do you say, commands you can actually get it from the PyTorch website itself, like when you search the data set. So you can just copy paste this command, see the commands to load and download the data set. And yeah, so we'll also be using some transformers. So transformers are these let's say operations, pre-processing operations on our data, so we can actually club them. Yeah, so as we are loading our images, so they'll be either in let's say JPG, PNG format, so NumPy. So we have to like convert them into tensors, and actually it's very important that we normalize our data. Actually, I guess you learn it in Cassandra. So let's say you have some features which is temperature. Temperature ranges from, let's say, 20 to 40 degrees, and you have one more feature which is called rainfall. So that will be like around from 100 to 200 centimeters. So because rainfall has a higher number, it's like it's more biased. Like the model treats rainfall with higher importance than temperature, but it need not be, right. So a degree variation in temperature might be more affecting than what we get in rainfall. So it's important that we like scale our values, so they're with let's say around a certain number. So here we have just taken that such that the variance of the images and the mean and variance is 0 and 1. So we are just normalizing the images. So yeah, so these images will be RGB, right? So we'll have 3 channels. So we have over 3 values. So this will be the mean. This will be the variance. Anyone has doubts still here about loading the data set and like performing this pre-processing
Yeah, so we'll just pass this transformers when we are loading the data set. That's it. So while loading the dataset itself, the PyTorch performs this transformer string. So eventually you will have the dataset in form of tensors. Yeah. So we'll just visualize some of the images. And yeah, so let's say our dataset is very huge, right? So it has like say 16 or 20,000 images. It's not possible that we like load all the images at once into the RAM and like perform gradient descent on that. It might take a lot of time. So what we do is we divide our images into batches. Let's say four. Yeah, so here we have taken four. So we just group four images as one. So here you can see when we iterate over the data set, we can see there are like four batches. So we perform our gradient descent on this and like we update our weight. The update might be very small, but we do update our weights and then we like perform the same thing over and over again. So once we load this into the RAM, we just perform gradient descent and then we move on to the other images. So this might be, yeah, so this will actually be faster than performing gradient descent in all the images at once, because it might not be possible also sometimes to perform because the RAM is very small. Okay, so now let's start building the model. So as I told, the dataset is very huge. So we'll be using GPUs to train our model. So we can define GPU as, we can actually define a device called GPU so that whenever we create a tensor, like we can like directly transform them into GPU. And yeah, so you might have already learned in Python, right? So Python is object-oriented programming. So you have classes and you have those functions in the class. So we'll also define that model as of class itself. So yeah, so we'll start by passing. So this function inherits from nn.module, which is a torch package. You don't need to remember that thing. I just pass this into the class while you're creating it. And all Python classes have this default function. This is actually a constructor in Python. So this is called init. So you have to declare it while create, like, so it gets called when you create this object. And then whenever you pass anything into the while creation, they actually get passed into the init function, and then we can actually perform our operations. So yeah, you have already seen that neural network is just a combination of these linear regression models, right? So let's say you have an input, you have like several inputs, and you just pass it like you usually pass it through a linear network, right? So this goes over here and this goes to the next one, and at the end you just got one output by performing linear regression. So actually, yeah, so neural networks is the same thing, but what we do is when we have our inputs, we have like several layers, right? So let's just say this is layer one, this is layer two, and so on, right? And whatever the output of these layers will be, we'll just feed it into the next layer, and like we can move on. So here, but whatever representation, whatever the math, whatever it could come up with, this will be much more complex. So yeah, so we'll just pass all of the inputs to all of these layers, and again whatever comes out we'll just pass it to all. Yeah, so just neural networks is just a stack of these linear regression models. So we can define the linear regression model using the inbuilt function nn.linear. So here it takes the input size and the output size, whatever the input size will be the size of this array and the output size will be the size of this array, this one. So we just pass those variables and we can define any number of layers as you want. And to create some non-linearity so that the model can learn some complex functions, we use these activation functions. So these functions we already discussed in the meet. So we just pass these functions. So these functions just add non-linearity to the code so that the model can learn much more complex expressions. And yeah, so we also define on forward, like you've already seen what the forward propagation is, right? So this forward does the same thing. So we just pass our x into the layer one. So fc1, you can see it's defined over here.
So we pass it to layer 1 and we get an output, and we pass this output again to this activation function, and we get another output, and we just keep on doing the same thing. So we pass it to FC2, we pass it to tanh, and whatever we get the output, we just pass it to the next layer, and at the end we get some final output. So yeah, so the problem what we face now is because the images are RGB, right? So you have one channel for uh, these different colors, and let's say the in Cipher 10 all the images are 32 cross 32. So each RGB, these all are run by arrays, right? So this is a 2 cross 2 matrix, this is 32 cross 32. But as you see in a linear network, it actually takes input in like one dimensional. So the input just should be a single dimensional array, which you have to transform this into a single dimensional array and just pass it to the network. Right, yeah, so the same thing we do over here. So the input size will be 32 cross 32 cross 3. So we have to just flatten whatever we get. So we can flatten the the three-dimensional array into a single dimensional array and just pass it to the neural network. Yeah, and then we can see, so we have a number of classes which are predicting is 10, right? We have 10 classes over here. Yeah, so we have 10 classes over here, and we have, let's say, 3000 inputs, 3000 features. So we have to somehow decrease the what we say features at the end. So for the first layer, let's say the input is 3000, and then we decrease it to 1000, and from 1000 we decrease it to 256, and so on. We go on decreasing the feature size. Yeah, those will be hidden layers. So this will be the hidden layer, this will be another hidden layer. So we'll be working with two hidden layers. And also you've seen in linear regression that we work with, like, let's say, two weights, right? W and B. But as now we are increasing the size of our linear layers, and also we are having a larger feature set, which is like around 3000 features. So the number of weights also increases. So here we have around, like, say, 3 million weights. So it'll be like to write the update function for each of these weights should be like manually. It's very difficult, so we'll be using other inbuilt functions. We'll discuss them at the end. So yeah, so this error is same like loss. So there we used to use mean square error loss. Here we, because we have our classification and we have like, say, 10 classes instead of 2 classes, we use cross entropy loss. And yeah, so what does cross entropy loss do is, let's say, yeah, we've learned of softmax, right? So we have outputs of the last linear layer as some random values, and we have to just convert them into the probability. So the highest value will have the highest probability, and the lowest value have the least probability. So loss does the same thing, right? It actually similar to your logistic regression, but with a few changes. So let's say we got our probabilities as like 0, 0, and 1, and our label is 3. Like, so the third class should be actually the correct label. So this loss, we can, this loss function uses this formula. Say it takes x's are like the array, right? So it takes the negative of the value at that array. So it's over here 1. So 0, 1, 2, 3, and the third one will be 1. And we just take the log of all the remaining values with their exponential values. And at the end, we just calculate loss. Don't worry about the derivation. Like, we'll discuss it in the next class in depth. And I also told you that we have like 3 million weights, right? So it's important for us to like update each and every weight, but like manually writing the update statements will be take too much time. So we can actually use this optimizers. Optimizers actually just update our weights. So when we calculate our loss function and we want to update our weights, we just use these optimizers. So yeah, so optimizers just take two parameters. Here we have given two parameters. So model parameters is the weights of the model, and our learning rate, whatever you want to use. So yeah, so the work of optimizer is just to update these weights,
And so then we come to write our training loop. The loop is like the same thing whatever we have learned before, but here we actually have to like loop over our train loader. So I told you that we each batch will have only 4 images, right? So let's say we have like say 10,000 images. So we'll have 10,000 divided by 4 number of times you have to loop over the train data set so that all the images are covered. And then yeah, so now because we are using GPU, it's important for us to place our images and labels on GPU. The same thing we did with the model over here. Yeah, so the model also we place it on GPU so that we can like use a GPU to parallelly process our calculations, and it will be much faster. So then we just pass our images into the model, that will be our output, and then we cross our calculate our loss. Here we have used error. Yeah, so error will be our cross entropy loss, and then we just use backpropagation, and instead of using these, what we used to write is W is equal to W minus the gradient, right, times the learning rate. So instead of just manually writing these update statements for all the weights, we just call optimizer.step. So it takes care of updating all the parameters, and like what we used to write w.grad is equal to 0. We just replace it with optimizer.0 grad. Instead of writing this command, we just write this command. It's the same thing. And yeah, so yeah, so to get to know, like we have predicted our probabilities, right? So at the end, the cross entropy loss and our probabilities. So we get at the end the output of the neural network is these probabilities. It's between 0 and 1, and the highest one is most probably the one which the model predicts is correct. So that's what we're doing. We are taking our outputs, and then we're just finding the maximum index at which we're getting the highest probability, and that will be whatever class we predicted it as, and those will use it to calculate our accuracy. So actually this is not important for us, important for the model actually. The model only works with loss, but for us to understand, because we can't interpret what is loss, it's we use some metrics like accuracy, which it's easier to interpret and compare other models with. So yeah, so then we can calculate the number of correct images that it predicted will be the sum, and then we just put it to CPU, because all our data is on CPU, right? And then our array which we use to store the loss and accuracy for each epoch is actually a list. So list lie on our CPU. So yeah, then we just calculate, yeah, and then just we print our loss and accuracy, and we just store it in an array. Yeah, so this training might take some time, like we're using 50 epochs and it took around 40 minutes to train. Already trained it once, so it'll take some time to train it. And you can see, you can visualize our loss here, right? So with this the loss which is on our y-axis, and the number of iterations or epochs is on our x-axis. You can see the loss is what you say, very noisy. It's not continuously decreasing, neither increasing. So it's important for us to try different optimizers, right? Here we have used SGD, but we might experiment with Adam or any other optimizer, and then the loss might become more stable, and we might the accuracy might increase. Uh, yeah, I guess that's it. This is just test metrics. This is not required. So anyone has any doubt regarding the implementation?
take it as a no. And any was any doubts regarding the assignment or anything which you want to discuss, you can do it, or you can leave the meet, I guess. भैया, in the last assignment, we can only tune, means what can we tune, means the the result is coming saturated very much. 1 second. Yes. Like after training for 1,000 to 1,000 epochs, the loss is not decreasing whatever we do. Just share my screen. Yeah, is it visible? Yes. Yeah, so you're talking about your test metrics, right? To improve your test metrics. To improve your accuracy in general, you're talking, right? Am I audible? Is this loss dot item? Oh yeah, so you're talking about this thing. Okay, yeah, same Yes, thing. yes. So after 1,000 epochs about, this value becomes constant. Yeah, so what are you getting your loss or accuracy as? Wait a second. But in the end, that F1, the average F1 score is coming about 7.1. Accuracy, like the accuracy and F1 score, that's it. Can you repeat? The voice broke. This, what do you say? This one, what are you Yes, getting this this accuracy as? is 0.71. Okay. I guess it has like you can push it up till 0.78. What you can actually you can actually increase the number of epochs. Actually, that's what you do. And if you want, you can even change epsilon value. Mm. Yeah. So what are you changing actually? I meaning apart from Learning tuning rate the. and number of epochs, just nothing else. Currently, means weights and batches are randomly defined, assigned. Yeah, I guess only those two you have to like change. There's nothing else to change. You can, I guess, you can achieve till 0.78. That's what I got as Okay. maximum. Uh-huh. Yeah, there's nothing else to do. You can actually, if you want, change the split also. You can make it 0.1 so that you get more number of training data and less of testing data. So can we do this, means at time of submission, can we change, means uh, look by dropping some data or merging something like that, Drop. means Yeah, you can do anything. Yeah, but you don't need. You shouldn't use external data. That's it. like adding one more parameter, like, or fusing two parameters, means Yeah, you just can do trial that. and testing. Okay, Yeah, you okay. can. Yeah, like if you want more, like this is just we wanted to check whether you could just implement a basic function logistical regression or not. But like if you want to you go for the bonus course, you can do, I guess there's no problem. Yeah, anyone else has any other doubts?
Yeah, I guess if there aren't any questions, we can end the meeting here.